Welcome to you all on behalf of the India International Center in Jan Prasar to our annual discussion on state of the Indian economy, Indian media. Sorry, not the Indian economy. Okay, but it's all related. So that's a Freudian faux pas. So this conversation marks the 34th anniversary of the presidential assent to Prasar Bharati Act 1990 and is the 31st discussion in the annual series started in 1994. So what we do now is we don't discuss about Prasar Bharati because we think it's a lost cause. It's become totally a pocket borough of the powers that be. So there's no point in wasting our time discussing that. It's beyond redemption unless there's a major political change. So today we are talking of the state of the Indian media, and we have a distinguished panel with us. We have Urmilesh, who was the executive editor of the Rajya Sabha television and has now got his own YouTube channel. And Arfa Khanum Sherwani who is the senior editor of The Wire, will be joining us from Stanford University, where she's on a sabbatical. Is she there? Okay. Anyway, she'll join us in a few minutes. And then we have Nikhil Pahwa, the youngest in the panel, probably, and he's editor of MediaNama. And yours truly, Suhas, Borker, and the convener of Jan Prasar, and happened to be the trustee of the India International Center. So without further ado, before I ask the panelists to speak, can we have that the first slide of this too, with the world map? Yeah. No, can you? It's not possible to zero in on the. Yeah. So that's the World Press Freedom Index, and we are shown in that dark brown, which is absolutely unsatisfactory. There, and yeah. Can we go on to the second one? No, the graph. No, there's a graph there, no? The second, no, the second, yeah, that one. Yeah. Now, can you, yeah. Okay. That's how the Indian press index has plummeted, So we are way down now. And we are 159 out of 180 countries. So look at that dive that graph has taken, So this is very worrisome. And what has happened is that there is, in fact, the powers that be criticize this index, the methodology, and say that it's all being cooked up. But you see, for preparing the index, they go into the economic context, they go into the political context, the socio-cultural context, the safety evaluation of journalists. So all that is done, and then that index is prepared. So I don't think that's the proper way of being critical of the index, because your position is down, So that's counterproductive. So we'll talk about that later. The other thing while I was preparing for this
the opening remarks, I came across a 2012 statement by economist Amartya Sen. And that statement looks so innocuous in the scenario what is happening to media today. He was saying at that point that there is professional laxity which leads to inaccuracies and mistakes. He's talking about the media, Indian media. And then also he says there is a class bias in the choice of what news to cover and what to ignore. We found that. But that seems so inappropriate now to talk of that was 2012, now to talk of it in 2024, when, there is a virtual kind of a attack on the media by the powers that be. And it is virtually claustrophobic, So with those remarks, I'll ask Urmilesh to open the innings. So Arfa has joined now. I can see her. Yes. So sorry to have woken you up so early in the day. What is the time there? Thank you very much. It's 5:35 a.m. Okay. Good. As a sincere member of the media fraternity in India, I thought it's my responsibility to show up for the event. Thank you very much. सुहास बोरकर साहब और यस सुहास बोरकर साहब और यहाँ मौजूद सभी दोस्त, सबसे पहले मैं आईएससी का और सुहास बोरकर साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मीडिया पर बोलने के लिए कहा, जो मेरा विषय है। लेकिन विषय होने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मीडिया के बारे में मैं चिंतित रहा हूँ क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा हूँ और लंबे समय तक मीडिया के रिव्यू या मीडिया की समीक्षा का एक कार्यक्रम भी मैं करता रहा राज्यसभा टीवी पर, उसके बाद द वायर पर भी किया। तो मीडिया की समीक्षा, मीडिया का मूल्यांकन, मीडिया की आलोचना, ये मेरे विमर्श के हिस्से रहे हैं। उस नाते मैं कुछ बातें संक्षेप में कहूँगा क्योंकि 3-4 लोगों को बोलना है, लेकिन क्वेश्चन आंसर मैं चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान साथी आए हैं, खासकर जो स्टूडेंट हैं, जो जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, वो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम थोड़ा कम ही बोलेंगे और आप लोगों के लिए सवाल जवाब के लिए हम मौका देना चाहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो आज भारत में मीडिया की स्थिति है, उसके बारे में मैं कुछ ऐसा नहीं बता पाऊंगा जो बिल्कुल जिसको आप न जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, वे लोग भी जानते हैं जो इंडियन स्टेट जो मीडिया के बारे में जो उसका अप्रोच है उसके समर्थक हैं, और वे लोग भी जानते हैं बखूबी जो उसके आलोचक हैं। जो समर्थक हैं वो मीडिया के समर्थक नहीं हो सकते, वो अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक नहीं हो सकते, लेकिन जो आलोचक हैं उनके अंदर भी अलग अलग धारणाएं हैं, मीडिया के बारे में अलग अलग सोच है। देखिए, हमारे यहाँ मीडिया ऐसा नहीं है कि केवल आज ये स्थिति पाया है, मीडिया की समस्याएं पहले भी रही हैं। आज वो गर्त में जा गिरा है, आप यूं कह सकते हैं कि वो रसातल में जा गिरा है, ठीक है जी। लेकिन मीडिया बहुत कोई स्वर्णिम कहानी नहीं है भारत में मीडिया की। इट्स नॉट ए ग्रेट गोल्डन स्टोरी जो बहुत सारे लोग बोलते हैं। आजादी के सूर्योदय में भी मीडिया ने जिस तरह के काम किए थे वो कई ऐसे नहीं थे कि जो हम जिस पर गर्व कर सकें। हाँ, आजादी जब नहीं मिली थी और आजादी के लिए लड़ाई जब चल रही थी तब मीडिया ने बेमिसाल काम किया। उस समय मीडिया हम नहीं कहते थे, उस समय हम प्रेस कहते थे। और गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप एक अखबार था, कानपुर से निकलता था,
और आप कहेंगे उनको देखकर उनकी तस्वीर और उनके पूरे व्यक्तित्व की पुराने जमाने का कोई एडिटर है, लेकिन वो इतने मॉडर्न आउटलुक के व्यक्ति थे, गणेश शंकर विद्यार्थी। और उस दौर में वो दुनिया भर में जो अखबार छापते थे भारत के बारे में, शेष वर्ल्ड के बारे में, उसको वो पेश करते थे अखबार में अपने। तो मैं एक बार कानपुर में एक लेक्चर देने गया, तो मैंने पूछा कि प्रताप में अर्जेंटीना से लेकर अमेरिका और जापान से लेकर कोरिया के बारे में ये छपता कैसे था? तो लोगों ने बताया कि इसलिए, क्योंकि वो तो नेट का जमाना नहीं था, तो लोगों ने बताया कि इसलिए छपता था कि वो अंग्रेजों का शहर था, वहां छावनी थी। तो 2 स्टॉल ऐसे थे वहां बड़े बड़े, जहां अखबार जो विदेश के हैं वो आते थे, और प्रताप के एडिटर गणेश शंकर विद्यार्थी फौरन सबसे पहले ग्राहक होते थे वहां विदेश से आने वाले अखबारों के। और एक आदमी जो आजादी की लड़ाई में भी लड़ रहा था और जो पत्रकारिता की भी लड़ाई लड़ रहा था। और आप लोगों को शायद जानकारी होगी, कुछ लोगों को, कि प्रताप की जो गौरवशाली परंपरा है उसमें भगत सिंह भी हिस्सा थे। भगत सिंह वाज ए कॉलमनिस्ट इन प्रताप, और बलवंत के नाम से वो आर्टिकल लिखते थे। तो एक दौर में जानबूझकर थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ले रहा हूं कि आज के मीडिया के बारे में बता सकें कि ट्रेडिशन हमारी क्या थी। तो प्रताप वो अखबार था, वो शहीद हुए 19 आई थिंक 31 के आसपास वो शहीद। लेकिन उनसे पहले अबू बकर शहीद हुए। हम समझते हैं कि भारतीय मीडिया का पहला शहीद पत्रकार अबू बकर है, मोहम्मद अबू बकर। वो 1857 में शहीद, ब्रिटिश हुकूमत से जूझती, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कह लीजिए, उससे जूझते हुए, और उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया था, और वो दिल्ली गेट के आसपास, और उनके अखबार का नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। लेकिन कितने लोग हमारे मीडिया में जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता का पहला शहीद अबू बकर है? कितने लोग जानते हैं? जानने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आज का जो कॉन्टेक्स्ट है समय का, राजनीति का, वो समझ सकते हैं आप। लेकिन अभी हाल में मुझे बहुत खुशी हुई, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा समारोह हुआ अबू बकर की याद में, और मासूम मुरादाबादी ने एक वेल रिसर्च बुक लिखी है जो इस मौके पर रिलीज हुई। जब हम वायर के लिए प्रोग्राम पेश करते थे, उस वक्त भी हमने एक प्रोग्राम अबू बकर के कॉन्टेक्स्ट में किया था। और सबसे पहले जो मैंने देखा, सिद्धार्थ वरदराजन ने एक बहुत आर्टिकल उन्होंने तैयार किया था अबू बकर पर, जो छपा था अंग्रेजी में। उससे हमको काफ़ी मदद मिली। फिर हमने भी कुछ बहुत सारे लोगों से बात की। तो ये हमारी ट्रेडिशन रही है पत्रकारिता की। वो क्या थी ट्रेडिशन? उस समय तो आज़ादी की लड़ाई थी। तो आज़ादी की लड़ाई के लिए पहला जो मकसद था, मिशनरीज एक पत्रकारिता। लेकिन जब आज़ाद हुआ भारत, तो प्रोफेशनल जर्नलिज्म की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हम बढ़े भी, नए छापे खाने आए, नई तरह की टेक्नोलॉजी आई धीरे धीरे। लेकिन हुआ क्या कि सत्ता और मीडिया यानी पत्रकारिता, अब हम प्रेस कहें उसको, क्योंकि मीडिया उस समय ये नहीं था, जैसे कारपोरेट है, ये भी नया शब्द है, ये 90 के आसपास आता है। हमको 90 के आसपास सुनने को मिला, इसके पहले कम चलता था, उद्योगपति पूंजीपति चलते थे। वैसे ही मीडिया भी बाद में आया, और मीडिया इसलिए आया कि मीडिया में बहुत सारे उसके कंपोनेंट जुड़ गए। तो प्रेस जो है, अगर आप देखें तो आजादी जब मिली उसके बाद सत्ता और प्रेस के रिश्ते कैसे बने, वो आप देख सकते हैं 3-4 चीजों से। 1953 में 2 राज्यों की सरकारें डिसमिस कर दी। 1953 में पहली सरकार डिसमिस की गई पंजाब में, और दूसरी सरकार डिसमिस की गई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार डिसमिस की गई। और डिसमिस ही नहीं की गई, शेख अब्दुल्ला को गुलमर्ग के गेस्ट हाउस से, जो प्रधानमंत्री थे अपने सूबे के, उनको सीधे एक डीआईजी ने आकर के और जेल में घुसा दिया। यानी प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री उस समय होते थे जम्मू कश्मीर के, आप तो जानते ही हैं। तो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को सीधे जेल डाल दिया गया। बट व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ इंडियन मीडिया दैट टाइम? And what the response of Indian media when Punjab government, Gyan Singh government was dismissed? दोनों मौकों पर इंडियन मीडिया ने सेंटर का खुलकर सपोर्ट किया। और ये बात मैं अपने रिसर्च के आधार पर कह रहा हूं, जो मैंने एक काम करते हुए, जो काम मेरा अभी तक नहीं आ सका किन्हीं कारणों से, जो मैंने देखा कि
भारत के जितने अंग्रेजी अखबार थे, दिल्ली से छपने वाले, मुंबई से छपने वाले, कलकत्ता से छपने वाले बांग्ला अखबार, सब में आमतौर पे सपोर्ट किया गया था, क्योंकि आजादी का सूर्योदय था। हम लोग बहुत खुश थे कि सरकार जो भी करेगी सब सही करेगी, तो हमने एक तरह से छोड़ दिया था। तो एक जो आपसे मैं जानबूझकर ये आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि कहां से हम कहां पहुंचे हैं आज। लेकिन क्रिटिकल आवाजें भी उभरी, खासकर जिन सूबों में ऐसा हुआ, क्रिटिकल आवाजें उभरी, लेकिन वे सुनी नहीं गई ज्यादा। फिर 1959 में ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार गिराई गई, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की तरह नहीं थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो आमतौर पर कम्युनिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करते थे डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी के साथ हुआ है। लेकिन वो क्यों डिसमिस किए गए? क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट जो बताती है उस समय के गवर्नर की कि हिंसा का माहौल और गृहयुद्ध का माहौल केरल में बनने वाला है, इसलिए डिसमिस की जानी चाहिए। मिसेस गांधी वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंदिरा गांधी, शी वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड जवाहरलाल नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन राज्यपाल की जो रिपोर्ट है बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि गृहयुद्ध की स्थिति केरल में बिल्कुल नहीं थी। उस समय दो मामले थे, पहला मामला था लैंड रिफॉर्म्स बिल, और दूसरा मामला था एजुकेशन बिल। इन दोनों को लेकर के ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार आगे बढ़ रही, और इसको नॉक कराने देने के लिए ट्रावनकोर के राजा से लेकर के और जितने और राजा महाराजा छोटे थे सारे लगे हुए थे। और उस वक्त चूंकि जो स्टेट पावर जिन लोगों के पास थी उसमें बहुत सारे लैंडलॉर्ड लॉबी, बाद में डेमोक्रेटाइज हुआ, उस पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेटाइजेशन चला। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस में भी डेमोक्रेटाइजेशन चला है लंबे समय तक। पहले जो थे राजे रजवाड़े बहुत थे, हालांकि स्वतंत्र पार्टी जनसंघ में भी कम नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में तो ज्यादा थे क्योंकि उनका राज था। तो उस वक्त क्या हुआ कि इन लोगों ने, राजा महाराजाओं ने उनको कहा कि नहीं साहब, ये तो नहीं होना चाहिए, इनकी सरकार हटाइए, नहीं तो ये तो लैंड रिफॉर्म्स कर देंगे, ये तो एजुकेशन सब पढ़ने लगेंगे, क्या मतलब है। और हम जानते हैं कि केरल में पढ़ाई लिखाई के मामले में ईसाई मिशनरीज और पुराने राजे महाराजे भी कुछ एक सेक्शन, उन्होंने बहुत काम किया, और फिर कम्युनिस्टों ने भी बहुत काम किया। बहुत वर्षों पहले मैं एक बार केरल घूम रहा था, अरुंधति राय की माँ मेरी राय से मेरी मुलाकात हुई, और जो कतई कम्युनिस्ट नहीं थी, लिबरल थी, और कम्युनिस्टों की आलोचक भी थी मेरी राय। मैंने उनका इंटरव्यू किया अपने अखबार के लिए, मैं उन दिनों हिंदुस्तान में काम करता था, और मेरी राय ने ये कहा, जो कि लिबरल और बल्कि कई बार कम्युनिस्टों की आलोचना भी करती थी, उन्होंने कहा कि इस केरल में सभ्य बनाने में, केरल को सुसंस्कृत बनाने में, देश का सबसे अव्वल राज्य बनाने में 3 लोगों का बड़ा योगदान है। मैंने कहा कौन कौन? उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज, राजे महाराजे पहले के जो तरक्की पसंद थे, और तीसरा कम्युनिस्ट। दंग रह गया। मैंने कहा अरे, आप तो कम्युनिस्टों की क्रिटिक भी हैं। कहा नहीं, कौन कहता है, मैं उनके अच्छे कामों की पढ़ाई करती हूँ और उनके बुरे कामों की निंदा करती हूँ। तो मेरी राय की तरह जर्नलिस्ट होना चाहिए। मेरी राय वाज नॉट ए जर्नलिस्ट, शी वाज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। महिला आंदोलनकारी थी, महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी और जीता। तो एक जर्नलिस्ट को मेरी राय की तरह होना चाहिए, मेरा ये कहना कि जो अच्छा है उसकी प्रशंसा करो, और जो गलत है उसकी आलोचना का साहस दिखाओ। अगर आप चिपक जाते हो कि नहीं हम तो यही कहेंगे क्योंकि वो ऐसे हैं, वो हमारे हैं, तो फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मानना है कि आज जो गोदी मीडिया कहलाता है, जिसको मैं प्यार से टेलीविजन को टीवी पुरम कहता हूँ और दूसरे हिस्से को मीडिया पुरम कहता हूँ, प्रिंट को, तो ये मीडिया पुरम और टीवी पुरम जो है, ये जिसको गोदी मीडिया आमतौर पे पॉपुलर भाषा में कहा जाता है, तो रिवर्स गोदी मीडिया नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया रिवर्स हो जाए बिल्कुल, कि एक तरफ गोदी मीडिया, दूसरी तरफ भक्त मीडिया, दूसरे किसी का। मीडिया को मीडिया होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यूट्यूब चैनलों की भरमार है देश में, लेकिन 100 में अगर 95% यूट्यूब चैनलों को उठाइए तो वो, उसमें आप पाएंगे कि जैसे गोदी मीडिया है उस तरह से आप पाएंगे कि एक एक ही सुर में गा रहे हैं। अब उसमें सच छुप जा रहा है, सच की जो आवाजें हैं वो छुप जा रही हैं। मेरा कहना है कि आज का मीडिया अगर कैंपेन केवल करेगा तो ठीक है, एक एक लेवल पर वो ठीक है, क्योंकि सत्ता के पक्ष में इतनी जबरदस्त आवाजें हैं, इतनी निरंकुश ढंग से सब सत्ता सब कुछ ये कर रही है कि उसका विरोध तो होना चाहिए। तो विरोध तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ध्रुव राठी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव राठी इज नॉट ए जर्नलिस्ट, इज ए ब्रॉडकास्टर। एक जर्नलिस्ट और ब्रॉडकास्टर में फर्क किया जाना चाहिए। तो एक जर्नलिस्ट को मैं समझता हूं कि
निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। मेरी बात जरा सा ध्यान से सुनिएगा। एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट को, जो हिंदी में कहते हैं निष्पक्ष, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको सच के साथ होना चाहिए। न्यूट्रल क्या होता है? एक लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा है, एक दलित का घर जलाया जा रहा है, और वहां आप कहिए कि न्यूट्रल हम होंगे, दोनों ओर से बात करें कि कौन क्या है? बिल्कुल गलत है। न्यूट्रलिटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी इज रियल एंड जेन्युइन वर्ड फॉर ए जर्नलिस्ट, जो मेंटेन करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हम निष्पक्ष नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब, हम तो आवाम के साथ हैं। अगर आवाम सफर कर रही है मौजूदा सत्ता से, तो आप कहिए कि नहीं सत्ता की भी थोड़ी प्रशंसा कर दो, थोड़ी जनता की भी प्रशंसा कर दो। नहीं, आई एम सॉरी, अगर कोई बिल सरकार ला रही है जो गलत है तो हम गलत कहेंगे। तो मैं जो बात आपको कह रहा था कि आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट ये है, ये जो सत्ता है इसको तो जनता संभालेगी। जनता, देखिए कोई भी निरंकुश सत्ता आती है, आवाम सबसे बड़ी ताकत है उसको बदलने या उसको समझाने की। मीडिया नहीं है, मीडिया केवल एक प्रेरक है। तो हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में जो हमारा मीडिया है उसमें संजीदा आवाज़ों की कमी है। संजीदा आवाज़ों की कमी इसलिए है कि हम, कोई एक तरफ है, कोई दूसरी तरफ है, और मीडिया की आवाज़ नहीं है। उसको कैसे लोग आगे बढ़ाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज आज है। ऑब्जेक्टिविटी, उस सबसे ट्रुथ के साथ खड़ा होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। 159 पर हमारा इंडेक्स में अभी स्थान है, 161 में पिछली बार थे। तो जो सत्ता के समर्थक हैं वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि थोड़ा सा हम ठीक हुए हैं, लेकिन आप देखिए कौन कौन देशों के मुकाबले आप ठीक हुए हैं। आप देखिए ना, आप फिलिस्तीन से बदतर है, आप जहां पर युद्ध की स्थिति है, और हमेशा से है युद्ध की स्थिति। इसके अलावा भूटान आपसे बेहतर है। रवांडा, रेडियो रवांडा सुना है ना आपने? 1974 94 है, उस दौर में था ना, 94। और उस दौर में कत्लेआम करा दिया एक रेडियो ने, रवांडा रेडियो ने। और रेडियो रवांडा जैसी आवाजें तो यहाँ पर चारों तरफ है। टीवीपुरम में, टीवीपुरम में कोई आवाज ही नहीं है जो रवांडा रेडियो से अलग हो आमतौर पर। लेकिन रवांडा की तरह कत्लेआम इसलिए केवल भारत में नहीं हो रहा है क्योंकि हम बहुत बड़े ताकतवर देश हैं। हमारे यहाँ जनता की ताकत बहुत है। किसान उतर जाता है, मजदूर उतर जाता है, ट्राइबल उतर जाता है, महिलाएं उतर जाती हैं, छात्र उतर जाते हैं, युवा उतर जाते हैं। इस देश को बिल्कुल एक तानाशाह कोई आकर के कहे कि हम आपको कुचल डालेंगे, पूरे देश को कुचल डालेंगे, ये संभव नहीं है। आवाम बहुत वाइब्रेंट है और हमारी हमारी सामाजिकता बहुत वाइब्रेंट है। वहां तो केवल कम्युनिटीज थी जिनमें लड़ाई चल रही थी रवांडा में। इसलिए रवांडा रेडियो जो है वो टूल किट बन करके बिल्कुल एक पिशाच की तरह सामने आ गया। यहाँ न जाने कितने पिशाच हैं रवांडा रेडियो की तरह। टेलीविजन चैनलों से पिशाचों की अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो चाहे तो कत्लेआम करा दो। आज ही मैं देख रहा था कि एक चैनल कल से लगातार चला रहा है, शिमला की मस्जिद को ढहाने के लिए पढ़ रहे हैं लोग, ये मस्जिद ये है वो है। अरे भाई, मस्जिद गलत है तो कमिश्नर ने डेट दे रखी है 5 अक्टूबर, नोबडी इज रिपोर्टिंग। 5 अक्टूबर म्युनिसिपल कमिश्नर की कोर्ट ने डेट दे रखी है सुनवाई की। अगर मस्जिद गलत बनी है तो डिमोलिश करेंगे उसके सारे फ्लोर, या एक फ्लोर या 2 फ्लोर, जो ऑर्डर होगा। लेकिन 2 टेलीविजन चैनलों को मैं देख रहा हूं, लगातार 3 चैनलों को, लगातार सुबह से शाम तक शिमला की मस्जिद, शिमला की मस्जिद, और दिखाए जा रहे हैं जनता उतर पड़ी है। अरे जनता क्या उतर पड़ी है? इट इज राजनीतिक हिंदुत्व जो उतर पड़ा है। आप जनता और राजनीतिक हिंदुत्व को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे लोग वही हैं, साफा एक ही तरह का लिए हुए। उसमें एक रिपोर्टर जो है अखबार का, उसने रिपोर्ट किया है सही सही कि साहब उसमें जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं शिमला में, उसमें अनेक तो एक ही पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए खड़े थे पिछले चुनाव में, एक ही पार्टी से उम्मीदवार के रूप में वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया झूठ बोल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रवांडा रेडियो रवांडा हमारे यहाँ बहुत है। ऐसा नहीं कि उससे अच्छा है, बहुत बुरा है, उससे भी बुरा। लेकिन हम बचे हैं तो सिर्फ इसलिए बचे हैं कि हमारे यहाँ आवाम जो है सचेत है, वाइब्रेंट है, डाइवर्स है, और ये हमारे देश की खूबसूरती है जो रवांडा में नहीं थी और बहुत सारे दुनिया के देशों में नहीं है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात मैं बहुत संक्षेप में ये कहूंगा कि हाँ सॉरी, ये बहुत बताना जो मेरे दिमाग में जो था कि देखिए, इनफैक्ट किसी देश का मीडिया वाइब्रेंट, डेमोक्रेटिक और ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्यों और कैसे होता है? इसलिए होता है कि वहां की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होती है, वो ज्यादा बेहतर होती है। आप डेमोक्रेसी का इंडेक्स देख लीजिए,
डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भी इंडिया बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और डेमोक्रेसी के इंडेक्स के अलावा एचडीआई का इंडेक्स कितना है भारत का? जिन देशों में मीडिया फ्रीडम का इंडेक्स 1, 2, 3 में है, मैं आपको बताऊं, नॉर्वे नंबर 1, डेनमार्क नंबर 2, स्वीडन 3, नीदरलैंड 4 एंड फिनलैंड 5। 10 पर बड़ा एक देश है जर्मनी, बड़ा देश, जो 10वें स्थान पर है, जिसने एक बार फासिज्म देखा है, जिसकी हम अगवानी कर रहे थे। तो और ये जो है, आप देखिए इन सभी देशों में डेमोक्रेसी जो है बेहतर है, और इन सभी देशों में एचडीआई का इंडेक्स भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 3 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है। तो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स जहां बेहतर है वहां मीडिया भी बेहतर है। तो मीडिया को आप अलगा नहीं सकते। आप एक भुक्खड़ और असमानता से भरे हुए देश में, जहां इतने 80 करोड़ लोगों को सरकार खाना दे रही है और कह रही है कि हम देश को आगे तरक्की करा रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम गरीबी मिटा रहे हैं, जहां पर इतनी गैर बराबरी है, जहां कास्ट अब भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो 1931-32 में अंबेडकर के लिए थी, और वहां पे आप समझ रहे हैं कि हम एक शानदार मीडिया ला देंगे, और वो मीडिया जिसमें एक ही तरह के समाजों के लोग ज्यादा हैं। ये कैसे संभव है? 1998 में रॉबिन जेफरी इंडिया आए थे। रॉबिन जेफरी मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में थे, और भी आप आजकल शायद सिंगापुर में है, और बहुत ही शानदार लेखक हैं, दुनिया के जाने माने इतिहासकार हैं। और उन्होंने इंडिया न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन नाम की एक किताब लिखी, आप लोगों ने देखी होगी, वो सारी भाषाओं में है मैं समझता हूँ, और कई जगह तो कोर्स में पढ़ाई जाती है। और इंडिया न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन में उन्होंने लिखा कि 1998 में भारत का राष्ट्रपति एक दलित था, और संयोगवश वो दलित राष्ट्रपति जिसको कह रहे हैं वो मेरा वाइस चांसलर था। मैं जब पढ़ता था जेएनयू में तो हमारा वाइस चांसलर था, इसलिए हमें गर्व है उस महान वाइस चांसलर पर जो भारत का राष्ट्रपति बना। उसका नाम था के आर नारायण। लेकिन वही रॉबिन जेफरी कहते हैं कि एक प्रेसिडेंट तो हमको दलित मिल गया, लेकिन एक भी दलित संपादक नहीं मिला। पूरे देश में घूम गया इंडिया को। लेकिन ये बात कहने वाला रॉबिन जेफरी केवल निकला, एक विदेशी पत्रकार। देश के पत्रकारों ने, देश के एडिटर्स इतने बड़े बड़े थे जिन्होंने डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने नहीं ये देश की आवाज। वाई ओनली रॉबिन जेफरी रेज्ड स्पेशल, एंड आफ्टर दैट पीएन मोनियाल आल्सो रेज्ड, some other people also raised, we also raised later when there was a survey in 2006 conducted by our friends. तो बहुत सारी कहानियां हैं मीडिया, इंडियन मीडिया के रूप को लेकर। अच्छा, बिल्कुल आखिर में मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इंडियन मीडिया ने जो उसका ये जो कैरेक्टर है वो रिफ्लेक्ट होता रहा है कंटेंट के सारे को समझने और उसको व्यक्त करने में। आप देखिए आजादी के बाद से जो बड़े घटनाक्रम है वो कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। केरला की कहानी मैंने बताई, तेलंगाना की कहानी आप जानते हैं। इसके अलावा कश्मीर की बताई मैंने, कश्मीर का कवरेज कैसा रहा ये भी बताई। उसके बाद देखिए जो शासन ने कुछ बेहतरीन काम किए, खासकर इंदिरा गांधी के जमाने में, बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स का खात्मा, कोयला इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन, मिसेस गांधी के महान रिवोल्यूशनरी स्टेप थे, ग्रेट स्टेप। ठीक है, इमरजेंसी में उनकी आप आलोचना की, हम तो स्टूडेंट थे, हमने भी आलोचना की, हम तो उसके खिलाफ खड़े थे, और उसके खिलाफ देश के पत्रकारों ने भी आवाज उठाई। यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जिस दिन इमरजेंसी लगी उसके नेक्स्ट डे कुलदीप नैयर ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में 111 जर्नलिस्ट गए थे, दहशत के बावजूद 111। ये देखिए पत्रकारिता में जो भी हो, लेकिन पत्रकारों में एक जिजीविषा भरे पत्रकारों का एक बड़ा जरूर जत्था है, जो सुहास बोरकर को देखकर हमेशा मुझे याद आता है, जो जिजीविषा इनके अंदर है, जो उत्साह इनके अंदर है इस उम्र में। तो वैसे ही 111 जो जर्नलिस्ट वहां गए, जिसमें 27 पत्रकारों ने साइन किया कुलदीप नैयर के साथ, और कहा कि हम इस इमरजेंसी की मुखालफत करते हैं। लेकिन उसी दौर में आप देखिए कि जो नेशनलाइजेशन हुआ और ये सारे जो काम हुए, उस समय ज्यादातर अखबार मिसेस गांधी के खिलाफ खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि बड़े पूंजीपति नहीं चाहते थे, बड़े राजा नहीं चाहते थे कि प्री पर्स बंद हो। हमारे एक मित्र जो बैठते थे अक्सर सेंट्रल हॉल में, वो तो मिनिस्टर थे और उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफा दे दिया, और वो नहीं है इस दुनिया में।
भानु प्रताप सिंह जी हम लोग के बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी राजा थे। एक उसके कोयला को लेकर सारे का सारा मीडिया में मिसेस गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया। इसके बाद आता है मंदिर का मामला। मंदिर के मामले में सारा मीडिया मंदिर के पक्ष में हो गया, खासकर हिंदी मीडिया, और अंग्रेजी मीडिया में भी एक्सेप्शन कुछ थे। तो क्यों हो गया, इसके पीछे भी कहानी है और वो बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा, उतना समय हमारे पास नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया को क्रिटिकल ढंग से देखने की जरूरत है, तभी आप अच्छा मीडिया पेश कर सकेंगे। अगर हम सोचते हैं कि एक मीडिया नर्क में जा चुका है, गर्त में जा चुका है, तानाशाही के साथ खड़ा है, तो हम केवल अपनी ताली बजाएं, हम महान हैं, हम महान हैं, हम महान हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको संजीदा होना पड़ेगा, ऐतिहासिक समझ डेवलप करनी पड़ेगी, आवाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मीडिया का मतलब किसी सत्ता, किसी दल, किसी विचारधारा के साथ नहीं, बल्कि आवाम के साथ खड़ा होना है। ये हमारी ट्रेडिशन है और यही प्रताप की ट्रेडिशन है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी की, जो महान पत्रकारिता का एक बड़ा सिंबल है अपने मुल्क में, और दूसरा मौलवी मोहम्मद बाकर का है। तो ये मैं चंद शब्द कह रहा था, बाद में डिस्कशन जब होगा तो हम अपनी बात कहेंगे। उर्मिलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Now I'll ask Nikhil to come in. Now we're going to now be a little more on specifics. I mean, we'll not be onto generalities. And you'll be focusing on the two broadcast bill drafts which have come up. And then also what is the expectation from the final draft? Okay. And then the third thing which we would like you to speak on is the impact of AI on media and how it will impact. So you have 15 minutes. Okay. Yeah. I'll be brief, sir. Yeah. Thank you. Firstly, thank you for inviting me to speak about, again, my profession. And I've built a online media business over 16 years. And I've seen the internet evolve. I am an early internet adopter, and I stopped reading print newspapers in 2007. And I haven't had a cable connection for television, I think now for about 10 years or so. So I am effectively dependent only on the internet, and that's the domain that I like talking about. I'd like to remind you that over the last, if you think about it, since 2020, in fact, in 2020, two online Indian publications shut down. One was Huffington Post India, and the other was Yahoo News. The reason why they shut down was because there was a 26% restriction on foreign direct investment in online news in India. In that sense, the restrictions that are placed on traditional newspapers was extended to the internet. And as a result of that, many online portals that were serving Indian readers folded up. The ones that remain are Indian. Another interesting thing that happened was that there was a business publication on venture capital called VC Circle, which had been bought by Rupert Murdoch's. It had been bought by News Corp, and they sold that to Mint because they realized that they couldn't. If they had to only own 26%, then they don't want to be in that business. So that FDI restriction that came in led to online publications shutting down in the country. Since then, there have been other mechanisms that have been brought in to restrict and control online media. In 2021, we had the IT rules, which created a separate category for online news and news aggregators and brought them under a regulatory structure where they had to register with the government, where they had to join a self-regulatory organization, put up a grievance redressal mechanism. But one important thing that brought in was that the government could issue an order under Section 69A of the IT Act, under those rules, to get news publications to delete articles which had been published. Now, the internet is very different from print. Once in print, you read it today, it's gone tomorrow. On the internet, the news remains. So quite often we've seen that there are news articles which disappear from websites a few weeks, a few months after they've been published. And here, under that particular clause of Section 69A,
which was activated for news under the IT rules, the government gave itself the power to censor online news. Some news publications, including The Wire, News Minute, Live Law, went to court and got an injunction on these rules. Uh, and as a result, the government lost that power to censor online media. Uh, what happened after that was that the government came out with an amendment to the rules to create a fact-checking unit, wherein the government would have the power to fact-check news about itself, and it could therefore direct social media platforms to remove the content. So most discovery for news publishers happens through two platforms. One is through social media, which is your Facebook, your Twitter, Instagram, etc. And the second point of discovery, which is a larger point of discovery, is actually Google search. Um, so, but most online publishers don't have a direct access to the readers. There is very little in terms of circulation. Newsletters are important, but really most of the traffic, most of the readership comes from social and search. So or giving yourself the power to censor news via online via social networks meant that the news would also not be read. So it's a form of censorship. So Kunal Kamra, the comedian, went to court, and there is a split verdict from the Bombay High Court regarding this. So why I'm telling you about this about the FDI, about the IT rules, is that these are the first two steps in the mechanism to create a broader regulation to regulate online news media in particular, and that's where the broadcast bill comes in. So the broadcast bill, when it came in the first part, and in fact was that it because there were these court cases, and one of the challenges in the court cases against the IT rules was that this is not allowed by law, as in the IT Act cannot be used to create an entirely new category for news and then create a full regulatory structure under news by itself. And they did this with Aadhaar also, that there was a challenge in the Aadhaar case that Aadhaar is not backed by law. And that's when Mr. Jaitley passed the Aadhaar Act as a money bill, because then that argument in court would have died because it was backed by law. And in the same vein, what you have with the broadcast bill is it is being brought in to legitimize and legalize the IT rules, which are being challenged as illegal in court, and create a framework for creating more regulations on online media, because the broadcast bill gives the government the power to, it's been withdrawn for now, but it would have given the government the power to not just regulate online news, but also create more rules in the future. One major shift that's happening in legislation, we've seen this especially when it comes to tech and digital, is that the government is passing laws giving itself more rule making power so that they can do reactive policy making. They don't have to run it through parliament each time. So, like with the IT rules, I think we've seen 5 iterations of the IT rules so far. In the same vein, the first version of the broadcast bill had 67 areas where the government gave itself the power to create new rules. Now, I don't remember each of them, but I do remember the more recent version of the broadcast bill, where there was going to be a programming code on online news. There would be an advertising code, but there was also a grievance redressal process. So if someone had a complaint about a news article, they had to file a grievance, and then every publication would have to have a grievance officer. Now, if the person who's filed that grievance is not satisfied with your response, let's say they've said that, I don't like this article, and you reject it, it's a frivolous sort of a complaint, they can then go to a next level, which is a self-regulatory organization, which in the IT rules framework is headed by a judge. And then that judge would adjudicate on your reporting, right? And if even that level fails, they can complain to the government. And the government had a broadcast advisory council, which would then have the power to give directions to publishers to take down content.
what was even more worrying was that if you, for example, chose not to comply, the government could then tell social media platforms to give your information and also force you to comply with the regulation, otherwise you would be removed from social media. So the power to control your actions, control what you're reporting, would then vest with the government, sometimes directly, sometimes through social media platforms themselves. That's the kind of power the government is giving itself. The worrying part was this was extended to not just publishers who run their own websites, but also to those who are on online platforms, on whether they are, if you have a very popular YouTube channel, or if you are publishing a blog, or if if you're a news influencer, so to speak, on Twitter or Facebook, or if you run a group where you publish information. Because I believe that journalism is not the exclusive preserve of journalists. News breaks on Twitter now. As long as you're following journalistic processes, anyone can be a journalist, in my opinion. That's because that's where I also came from. I'm a blogger who became a journalist and started a publication. Right. So it gives them the control over social media and the narrative and the speech um, that is there. But I want to be very clear that this is also an apolitical move. We saw similar restrictions on online speech coming from the previous government, where we had 66A. Let's not forget Mr. Manish Tiwari, who's a member of the Congress party and was a previous INB minister, in his submission to the Joint Parliamentary Committee on Data Protection, said that social media platforms should be treated as publishers. Now, when the moment that happens, social media platforms are liable for our speech on the internet, as in what you publish or what I publish or what anybody else says on the internet. No platform will survive that liability. So in the internet, there's this principle called safe harbor, that they are the medium and you are the messenger. So or you are the reporter of what's going on, right? So you are responsible for what you say online. The platform is not responsible. But what Mr. Tiwari is asked for, and what many members of the ruling party have also been saying for a while, is that social media platforms should be responsible. They're saying that because they want to control speech through the platforms. And so there is a very concerted attack also taking place on safe harbor, on this safe harbor principle. In March last year, Mr. Rajiv Chandrasekhar, who was the IT minister, talked about segmentation of safe harbor and differential regulation for different types of services, which meant that online news aggregators would have a whole separate set of regulations. What you're seeing right now is this expansion of regulation of the internet and expansion of regulation of speech on the internet and the news media. And effectively, there is so much compliance burden that's being added. That compliance burden itself is a form of censorship, because someone will not take the risk of speaking, because the cost of having a grievance redressal process, joining a self-regulatory organization that has a fee attached to it, um, it's expensive to do these things, right? So if you have scale, you have no revenue, or even if you do have some amount of revenue, like people are on blogs where they might give an opinion on what's happening on the news, or let's say my friend Amit Verma runs a podcast called Seen and the Unseen, which has, I mean, hundreds and thousands of views, and he advertises some things here or there on it. He would come under this regulation and have to join a self-regulatory organization, put a grievance redressal process together. Um, so it's not just the broadcast bill, by the way. There was an attempt last time in the Telecom Act to treat the internet as a telecom service and put in similar censorship restriction provision in the Telecom Act. Thankfully, that changed. Um, we've also seen, for example, media accounts being banned using 69A at different times, like Reuters accounts, not Reuters, I think the Caravans account in particular was also blocked under a government order. The Rajya Sabha MPs whose accounts have also been blocked. So, as all in all, there is a move to control uh, what's happening on the internet in terms of speech, but it's also not just coming from the center. Both Tamil Nadu and Karnataka have sought to set up their own fact checking units.
So if every government wants to check what we're reporting on them, effectively we'll only be reporting what the government is saying directly then, right? And it's both state and center fighting to control the internet, because let's face it, that a majority of this country consumes news, consumes information online. It's a substantially smaller set that's watching television and reading newspapers. I would say WhatsApp is the biggest media platform in the world, because more and more, most of us consume news through WhatsApp. So that's on the environment for online news and how that's shaping up. There is increased amount of regulation. We have another challenge approaching us, which is artificial intelligence. And I've experimented a lot with AI. We have our own internal AI policy. We use AI tools to help with editing, with sub-editing, with ideation, with headlines, with tagging. And so AI is quite significant in terms of just all the monotonous things that one has to do when you're running a website. AI makes it easier to do that. But you're also seeing media publications deploy AI in generating articles. I found, for example, about 2, 3 months ago, a news publisher had just published AI generated content without any editing. And they had put some AI tags in the headline itself, so it stood out. And so there are publications that are deploying AI in their workflows. Um, AI is actually great for ideation. It's great for checking, at times for identifying what to fact check, what to it in terms it. You can use it to look at transitions between paragraphs. You can use it for improving, let's say, from switching from passive voice to active voice, taking the inverted pyramid approach. So all the rules of writing, AI is extremely good at helping you. What it is not good at is trying to figure out facts. And it does generate misinformation, and it should never be used for facts. The threat that AI brings in is actually more worrying. What you're seeing is, for example, when Wired had a story about 8, 10 months ago about someone who just bought the domain name of a media site that had died, and then used that to fill it with AI generated content and ran ads on it. He made $500,000 in 6 months. Um, so there are people who are creating a lot of AI generated content, which can be created in like matter of minutes if you know the right tools to do this. They're available for like $50 to $100. In fact, these tools. And what's happening is that as media, as news media, we're competing with them. It takes 20 seconds for someone to automatically reproduce my article in completely different language, which is plagiarism, but it's not copyright violation, and have it published almost as soon as I publish it. They can automate that entire process now. The entire websites can be copied and cloned, uh, and it won't be copyright violation because the content remains the same. But if you remember what I said earlier, was the two primary sources of traffic for online media are search and social. So what's happening is social is getting flooded with AI generated content, and so is search. Google is struggling to deal with. If you see the quality of Google search has gone down in the last year and a half because Google's struggling to deal with AI generated uh, links and content, which are similar to the content that we might be publishing as news, right? And so, if effectively as publishers we are competing with a massive flood of AI generated content. And so discovery is getting impacted. If discovery gets impacted, we don't get traffic. If we don't get traffic, we're not able to monetize and make money. If you're not able to make money, we can't pay salaries, right? So this is a very, very worrying trend going forward, because if discovery dies in the next 2 to 3 years, you will find that media publishers will struggle to make money, and publications will shrink. On the other hand, AI itself is becoming a source of news. And this is the last thing I'll say before I close. AI is becoming a source of news. What's happening is that there are tools like Perplexity AI,
which use a Wikipedia approach to news. So live, as something's happening, it'll scan, let's say 20, 30 different, or sometimes 5, 6 different news websites, identify what those sites are saying, and then take facts from each and rewrite them into a very simple explainer article with citations to those sites and links to those sites. So it's plagiarism, but it's not copyright violation, it is citation. How do you contest that, right? And so if they are better at writing than we are, because they're taking facts from everyone, what will happen is our audience starts shifting to it. And again, that becomes a cause of concern from a revenue standpoint. So I'm not talking about where we are today, but I'm talking about where we are likely to be in the next 2 to 3 years, where there's going to be an existential threat, at least for online media. And since consumption is moving online, I suppose there's going to be a threat for all media. What emerges from this is individuals, because we will live in an environment of distrust with both flood of AI content as well as misinformation. What people as readers will trust are other people. And we've already seen the rise of the influencer economy in the country. Some of it is good, some of it is bad, but it's here and it's here to stay. So media brands are going to struggle, but media personalities are going to be are actually rising, because we trust someone who has the same values as us. We trust someone who we believe has a history of giving us quality news. And I think that's where we're headed from a media perspective, that there's going to be a shrinking of traditional media publications, but there's going to be the growth for individuals as sources of news and information. Thank you. Thank you very much, Nikhil, for that perspective on the broadcast bills as well as the AI. Now we go to Arfa. And, if you could tell us about how independent media redefined during the recent general elections, the entire media scene, and what is the future? Thank you. Go ahead. Thank you very much for this opportunity. I hope I'm audible to all of you. So I think Urmilesh ji went into the background. I am going to take you somewhat into the foreground. Nikhil also covered quite a, I would say, ground of technology and how technology is being used against journalists and how they can use technology to still tell the stories that needs to be told. I'm here at Stanford University, and I'm doing this fellowship called JS Knight Journalism Fellowship. In the past about 60 years of their history, they have taken about less than half a dozen journalists from India. And here, when we are discussing about the state of media, there are different categories under which they have invited journalists to come and share their experiences. And they're hoping that we will develop some tools for global journalism, for journalists internationally who are fighting dictatorships, who are fighting attack. And surprisingly, it breaks my heart to tell you that one of the worst countries which are being discussed under the category of journalism under attack are Russia, Turkey, the worst dictatorships in Latin America, and India, my country, also figures in that list, where journalism and journalists are under attack by authoritarian regimes. So I think before I go into celebrating this little window, little moment we've got after this Lok Sabha election results, and I start to tell you the role of independent media, we should not forget what all they have faced. Nikhil briefly talked about how, digitally they were attacked, how laws and technology was used against them. But I think people like me who have faced it individually, personally, professionally, my work was attacked, my family was attacked, my workplace was attacked. So I think we should not forget under which circumstances the media was working and how still it survived, rather I would say thrived in a sense, to tell the stories when it came to Lok Sabha elections. And the result of how opposition worked out, charted out their plan, and how media
kind of helped out to take that message to the people. And some of it, I think they were successfully able to do, despite there were all efforts to disempower them, to take away their tools through which they could do journalism. So somebody like me, what they tried to do when Mr. Modi came to power in 2014 and what happened until 2024, I think one of the worst pictures we saw in the last 24 hours when we talk about the democratic institutions being tamed, democratic institutions being intimidated. So how the assault on democracy started was with the attack on democratic institutions, one, on free press, two, and number three, on attack on minorities. So without which I think the regime knew it will be impossible to be in power, as they keep saying that we will be in power for the next 50 years. So they realized they needed to do these three important things in order to fix their spot in history, not just now, but 50 years down the line. And one of the worst pictures of that we saw in the last 24 hours when we saw Mr. Modi visiting CGI's house and, for Ganpati Puja, and, it's talk of the town, and we can debate, we can kind of, till cows come home, we can discuss how ethical, unethical it is. But how independent media was attacked in the last 10 years, especially between 2019 and 2024. Newsrooms were raided, including my own newsroom. There were police cases on us, on individuals. Entire news organizations like NewsClick, they were declared as terror organizations. I mean, journalists were literally they were being tried under anti-terror laws. And then individual journalists were being dehumanized, like myself. So whenever I will put up some journalistic work, they will say, oh, do not believe her. She's anti-India, she's anti-Modi, and she's anti-Hindu. So they will start with saying that I'm anti-India, then will they say I'm anti-Modi and I'm anti-Hindu. So which means my whole credibility of being a journalist, when that is under attack, that I am not an objective journalist, I cannot rise beyond my primary identity and tell the important stories that needed to be told, especially at a time when the so-called, mainstream media became so pliant that they became, an extension of the propaganda machinery of the regime. So then my journalism was attacked through an attack on my identity. So which means telling the viewers, telling the readers, telling people on social media that she should not be believed, anything she says, anything she reports, because she's not coming from a place of objectivity. She's biased. She's against one political party, one person, and against the majority community as a whole. So when you dehumanize people and take away the credibility of their profession, their professional credibility is being taken away from them, then trust me, it becomes really impossible to go ahead and still do what you do. I usually do not personalize things, and I usually do not tell stories about myself. But then I think this is a platform, and now since the elections are over and I'm a little far away from India, I can say that how difficult it was for me to cover the Lok Sabha elections. There were a couple of rallies where I was almost attacked. There were cars which were following me. At least 2 times it happened that I had to change the place where I was staying while reporting. In 2022, I was covering assembly elections, and I was in Lakhimpur. The video is available on the Wire's YouTube. And I was, so BJP people usually do not talk to me. I mean, even those who would know me, they say, party se hame nikal denge if we talk to you. So I was interviewing this BJP MLA who was contesting again for 2022 assembly elections in Uttar Pradesh. And I went to this village in Lakhimpur thinking that if they are not giving me an appointment for an interview, I will go there and maybe get hold of them where they are with, amongst their constituency, amongst the people that they are asking for votes. And this is exactly what happened. So I started my interview, and remember, this election was right after
the COVID virus, the COVID era. And I would say the COVID was still kind of around, and we were still struggling with the virus and how it was impacting day-to-day life. So I was asking him questions on why there were not enough doctors and why there was not enough facility in the hospitals in Lakhimpur, which came in his purview, in his area of work. So the gentleman answered my first question, my second question, and my third question. When he found it was difficult for him and he had no answers, when I started asking about the farmers who were run over by a jeep, by one of the accusation is that by one of the people in the regime, like, the sitting minister's son ran over a jeep on farmers, and at least 3 farmers were killed. And when I started asking questions on that, he found it difficult to reply, and he started saying, "Aap patrakar hain ya koi agenda lekar aaye hain?" And as soon as he said this, there were people and his supporters all around. They started chanting, slogans against me, saying Patrakarita, whatever, Murdabad, Bharat Mata ki Jai, Jai Shri Ram, and there were a few hundred people. I was there with one camera person and with one driver, and I realized that if I stay here for a couple of more minutes, my life will be in danger. I still continued asking him a couple of more questions, and I just immediately wrapped up the interview. And when I was coming back to the city, there were at least half a dozen cars which were still following me. And the moment is so I can remember it so vividly that still it gives me goosebumps. So this example was to tell you that even if the stories which do not end up, let's say, in journalists being killed or journalists being in jail, these traumatic moments can live with us forever. And still you wake up every day and decide to still do your work diligently, sincerely, the way you should be doing it. So, and this is besides the kind of threats, the death threats and the rape threats and the threats to families of journalists that they keep getting day after day, week after week, month after month, years after years, and it has been a whole decade. And I don't think that even this result, which is almost like a humiliating victory for the regime, it's going to do any good, or it's going to change their ways in which they have attacked journalists. Another incident I'll tell you, and I think sometimes it's important to tell personal stories, which are not personal, these are professional stories, to just kind of give the audience and the people of India context and also circumstances under which individual journalists are reporting. So I was in Kashmir in the month of May to cover Lok Sabha elections. I was being stopped by the police. I was stopped once, I was stopped twice. And the third time when I was being stopped, I told my camera person, he was a local gentleman, a local camera person. And, whenever the police will walk towards us to say something, the first thing he will do is he'll switch off his camera, because he knows the state of press freedom in Jammu and Kashmir, that how the police will be bothering him and his family. So the poor guy, he was so scared that even before the police says that you switch off your camera, he will do it voluntarily. But when it happened with me and with the both of us, at least 2 times, the third time when they were approaching, I said, you keep rolling the camera. I was talking to people, the local people. First of all, people don't talk. They are pretty much scared that if they talk to a journalist in the morning, for example, in the evening, they will be called to police station for inquiry. And you know what an inquiry means. So, so the third time he kept rolling when I insisted that you should roll. And the video is there very much on the Wire's YouTube, that police literally came behind the camera and you can see them walking towards us. Then they intimidated us and told us that you cannot report. So it is the largest democracy of the world where they say that they have integrated the state of Jammu and Kashmir more into the rest of India, and it has become now more an integral part of India as it was not earlier, and Mr. Modi has made history. But then journalism is not allowed. Journalism is interrupted. Journalists are intimidated. So these 2 incidents, I thought it's important to kind of give you an example that how it is not just
Jammu and Kashmir, where it happens. It also happens in the mainland, like Uttar Pradesh. So at least these two instances, there are many, but I think that's for some other day. But then despite these circumstances, independent media and independent journalists. And I agree with Urmilesh ji that everybody who comes on YouTube and does commentary is not a journalist. And there is a strong tendency now that journalists are not following the objectivity rules of journalism. And there are very, very few. There are many who are just doing it for eyeballs. They are just doing it for, better views on YouTube. And this is also, I would say, not a very healthy trend. It may not be, I will stay away from drawing a parallel between, a pro-Modi, a pro-BJP media and anti-BJP media. But then I would still say that journalists are losing objectivity very fast, and they are also kind of becoming propagandists for the opposition, which is not at all a healthy trend. But now coming back to, and briefly, I would like to discuss that how journalists successfully took the stories and some of the message, and why I'm insisting that they were able to take the message of what opposition parties wanted to say to the people, because it's important to understand that how they were not allowed any space in media, in the so-called mainstream media. I mean, I have objections to them being called mainstream media. The mainstream media, so-called mainstream media, they do not represent, at least I would say, 95% of Indian population. They do not represent farmers. They do not have any representation from laborers or their issues, women, the religious minorities, all of backward caste community. So it is just a very socially and politically dominant social group that they represent and call themselves mainstream. So I feel, first of all, we should just stop calling them mainstream media. So when they had completely blacked out the voices of opposition, they blacked out even their election rallies. It was the digital media which successfully conveyed the message to the people. And I would say this humiliating victory for the BJP, it shows a little bit success that digital media received in just carrying the message of the opposition. And I want to remind you, when Rahul Gandhi started his Bharat Jodo Yatra, he said one of the reasons, or maybe the single biggest reason why he was doing this Bharat Jodo Yatra, why he was carrying out this whole, exercise, was because he felt that his voice and his party's voice was not being heard by people. So how do you contest an election when you have journalists, anchors, TV stations being loudspeakers, and propaganda, speakers for the regime, for the party in power, and the opposition is completely blacked out. And he said he's starting this to remove media from between him and the people. So he removed media from the scene and he was directly going to people. I mean, the idea sounded like archaic, that in the age of global digitalism, what are you trying to do? How are you supposed to go to 1.4 billion people? Even if you walk for several years, you won't be able to go to them. But in the hindsight, now we think that I think this was a kind of a strategy where I wouldn't say that the Congress party or Rahul Gandhi was able to kind of reach 1.4 billion people, but at least I would say sufficient people that him and his party, and then later on it was followed by other parties and other leaders, that they tried to remove media, as in the mainstream media, which was anyway blacking them out, and directly reach to people. So in my view, there were three important factors which developed over the course of 5 years, which helped the opposition reach where they are, and also the voice of the people. When I say people, I mean people who have lived on the margins of Indian democracy for the last 75 years, but they have been pushed further in the last 10 years. And this is, again, the same people who are laborers, farmers, Dalits, Adivasis, religious minorities, many of the women, people of rural India. So these are the people whose voices needed to be heard. So these are three important major, I feel, mass movements. And you may disagree. I'm okay with that. First of all, I feel anti-CA and RC movement is when it all started. This was the first
pushback. And that came from the most marginalized people, the Muslim women of India. And the second was the anti-farm laws movement carried out by Indian farmers, the sons of the soil. And the third, and you are free to disagree, I feel, was Bharat Jodo Yatra by Rahul Gandhi. I am perhaps one of the worst critique of the Congress party of Rahul Gandhi, but I think the credit should be given where it is due. And if this was not for Mr. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra, I don't think we would be where we are right now. And so when the entire media blacked out, the mainstream media blacked out NTCA, NRC movement, the farmers movement, and finally, even the Bharat Jodo Yatra, it was the digital media, which despite all kinds of assault, all kinds of attack on it put itself and their lives on the line to tell the important stories. So when the history of contemporary India is written, it's very, very important to write about journalists who put everything at stake, even their lives on the line, to do journalism, to defend democracy, to defend freedom of speech, and to take people's voices to the foreground. So these are some of the things that I wanted to say. And I feel there were two major, two undercurrents that the digital media was able to successfully convey the message to the people. And two major undercurrents. There was one, that democracy and reservation are in danger. Two, hame tanashahi nahi chahiye. There were two things, I think, based on which this Lok Sabha election was directly impacted, and especially when we talk about people, the marginalized communities, especially the lower caste groups, that this message was successfully conveyed to them, and they realized that this was actually the moment for them to revolt. And so Constitution is in danger, number one, and number two is that hame tanashahi nahi chahiye. Even in remote villages of Western Uttar Pradesh, and even by people who had voted for this political party in the past, in 2014 and even in 2019, they realized that one man and one political party had just too much power. And now it has come to a point where they are crushing not just their voice, but also their lives. I feel, and I hope that independent voices will remain independent. And I am with Urmilesh ji in hoping and kind of expecting and also reminding our fraternity to not lose objectivity, to not lose foresight for just some views, for just a few more readers, and continue to defend democracy despite whatever it takes. Thank you. Well, thank you very much, Arfa. Now, we'll go into a Q&A, and we'll ask take the questions from the floor. Now, I just wanted to, put in a few points before the panel. You see, there is, when we talk of the state of the Indian media, there are certain fundamental issues which come up, and the major thing which strikes one objectively is that the corporatization which has taken place, of the media, and this corporatization is linked with kowtowing to the powers that be, because the corporates are linked with industry, the corporates are linked with mining, the corporates are linked with all sorts of businesses, you see. And then the funny thing is that when they are talking of, all business is regulated, but they use the banner of the freedom of press and say that the media should not be regulated per se, where the finances are concerned. You see, this is a dichotomy. But they will use this only as a subterfuge. But the basic thing is to make maximum profits. So you have corporatization of the media, you have the corporatization of the health sector,
you have corporatization of the education sector, and then also entertainment. So there is this is actually a kind of a pincer move, and is all linked with democracy in a broader way. So how do you, Urmilesh, react to that? I mean, there are fundamental issues dealing with the media. We can talk of so much in a campaign mode, but when we look at the fundamentals, there are problems. देखिए, जो हमारे देश की सामाजिकता है और राजनीति है, उसकी जो समस्याएं मीडिया से जुड़ी हैं, उसके अलावा मीडिया की अपनी भी समस्याएं हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात। कॉर्पोरेटाइजेशन ये 80 के बाद ये शब्द प्रचलित हुआ, जैसा मैंने पहले कहा। इसके पहले मुझे याद है कि नेहरू एरा में जूट प्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया कहा जाता था, इंदिरा जी के समय तक जूट प्रेस, और स्टील प्रेस कहा जाता था स्टेट्समैन। टाइम्स ऑफ इंडिया को जूट प्रेस, पूरे ग्रुप को, और उनको स्टेट। लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन जो मीडिया का हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, इतना पूंजी आया है, इतना उसका विस्तार हुआ है, अखबारों की संख्या बहुत बढ़ी है, सब कुछ हुआ है। लेकिन हमारा कहना है कि उसके लिए हमारे समाज में कुछ नए इनिशिएटिव नहीं लिए गए। यूके में भी यह समस्या उठी थी, लेवर्सन कमेटी, जस्टिस लेवर्सन कमेटी की रिपोर्ट आई और उस पर काफी डिस्कशन हुआ। कंप्लेंट कमीशन की बात आई, अपने देश में भी कई लोगों ने उठाया ये सवाल, कुलदीप नैयर ने उठाया, विनोद मेहता ने उठाया, और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों ने उठाया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। लोग भूल गए हैं कि इंडियन पार्लियामेंट ने 2012 और 13 में एक जबरदस्त काम ये किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री से रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, और वो रिपोर्ट जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 6 मई 2013 को लोकसभा में टेबल की गई। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। कहने के लिए वो पेड न्यूज और मीडिया रिलेटेड इश्यूज पर थी, लेकिन उसने कॉर्पोरेटाइजेशन से लेकर क्रॉस मीडिया ओनरशिप के जितने कॉम्प्लेक्स सवाल हैं, सब पर डिस्कशन किया। उसके चेयरमैन जो थे उन दिनों कांग्रेस के संभवतः वो लीडर थे उन दिनों, या शायद बीजेपी के थे, मैं नहीं जानता। सरकार मनमोहन सिंह की थी, और इंद्रजीत सिंह जो आजकल मिनिस्टर हैं, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट स्टैंडिंग कमेटी। और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत महत्वपूर्ण नेता, सीपीएम, लेफ्ट, हर पार्टी के थे। स्टैंडिंग कमेटी 2013 में जो सबमिट किया रिपोर्ट, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ टेबल होने के बावजूद। केवल मीडिया में हम लोगों ने किया। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि केवल हमने किया, बहुत लोगों ने किया। लेकिन काश इस देश के पॉलिटिशियंस, इस देश के मीडिया ओनर्स, इस देश के बड़े एडिटर्स सबने मिलकर उस पर, प्रेस काउंसिल तो बिल्कुल खामोश थी, प्रेस क्लब वगैरह ने, हम लोगों ने किया, सब लोगों ने किया। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ा हम चूके हैं। अगर वो काम हो गया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने जो घुटना टेक कर खड़ा है पूरा का पूरा मीडिया, वो संभव नहीं होता। अगर उस कमेटी की रिपोर्ट को एग्जीक्यूट किया गया होता, उसके मेजर पोर्शंस को। पहली बात देखिए, हम कहते हैं सत्ता, भाई आप अमेरिका में भी कॉर्पोरेटाइजेशन है मीडिया का, लेकिन वहां के कॉर्पोरेट में डाइवर्सिटी दिखाई देती है, अपने कॉर्पोरेट में डाइवर्सिटी नहीं है। एक सरकार आती है, अगर वो प्रचंड बहुमत वाली हो, तो वो सारे के सारे पूंजीपति जो मालिक हैं मीडिया के घरानों के, उनको अपना भक्त बना लेती है। केवल जनता के ही एक सेक्शन में भक्त नहीं बनाती है, सारे मीडिया के लोग भक्त बन जाते हैं। जो पहले कांग्रेस के साथ खड़े थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पीछे रहते थे, वो सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के पीछे हो जाता है मीडिया का मालिक। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका कोई दीन ईमान मीडिया के लिए नहीं, कोई नैतिकता मीडिया के लिए, उसकी सिर्फ पूंजी के लिए है, पैसे के लिए है, और वो पैसे के लिए उस पर झुका है। 3 काम होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। पहली बात कि क्रॉस मीडिया ओनरशिप का हिसाब किताब चुकता कर देना चाहिए। इस क्वेश्चन को एड्रेस किया जाना चाहिए था, जो आमतौर पे रिकमेंड किया था इस कमेटी ने, पार्लियामेंट्री कमेटी। इस पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन को आज उस रिपोर्ट को फिर से मैं इस सेमिनार के जरिए जीवित करना चाहता हूं कि उस पर डिबेट हो। दूसरी बात कि विज्ञापन नीति, जो एडवर्टीजमेंट की पॉलिसी है, उसको रीथिंक किया जाए,
और उसको डीएवीपी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो बनाए हैं, किसी के पास उसका अधिकार ना हो। उसके लिए इंडिपेंडेंट कमीशन हो और वो ये तय करे कि किस अखबार की कितनी सर्कुलेशन है, किस वेबसाइट का कितना रीच है, किस यूट्यूब चैनल का कितना क्या है, उसके हिसाब से सरकार अपनी विज्ञापन को बांटे। गवर्नमेंट के हाथ से विज्ञापन देने का, निर्धारित करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट कमीशन उसके लिए होना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट के 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी हों, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी हों, लेकिन इंडिपेंडेंट लोग हैं। अब आप कहेंगे इंडिपेंडेंट लोग कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते भाई? एजी नूरानी अभी दिवंगत हुए हैं, उस तरह के लोगों को लाइए। फाली नरीमन को लाइए, फाली एस नरीमन जैसे लोगों को लाइए। अब कहेंगे वो तो नहीं है जी, आप कहाँ से लाए? होंगे, आपके बीच में हैं, खोजिए उनको और ऐसे लोगों को बैठाइए। अगर आप कर सकते हैं ये काम, तो इंडियन मीडिया को आप एड्रेस कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम्स को, अदरवाइज नहीं, बहुत मुश्किल है। अब जैसे एक हमारे यहाँ जब प्रिंट था, तब प्रेस क्लब, अरे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना 1953 में, आई थिंक 1953 के बाद शायद। ये फर्स्ट कमीशन भी 1956 या 56, या उसके बाद फिर दूसरा कमीशन वगैरह वगैरह। मेरा ये कहना है कि आप इतना मीडिया विस्तार हुआ है उसका, और आपके पास कोई उसके पास आपके पास कोई फोरम ही नहीं है। तो एक ऐसा बड़ा फोरम होना चाहिए, उसका नाम आप मीडिया कंप्लेंट कमीशन रखिए या जो भी रखिए, जिसमें प्रिंट का एक अलग एक कंपोनेंट हो कि ये प्रेस काउंसिल जैसे है, तो उसी तरह का एक फोरम हो जो केवल प्रिंट को एड्रेस करे, उसकी प्रॉब्लम। दूसरा टेलीविजन को करे, और तीसरा जितने वेबसाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको करें। और तभी मैं समझता हूं सही में सेल्फ रेगुलेशन। ये जो टेलीविजन के मालिकों ने, पत्रकारों ने, संपादकों ने जो बना रखा है सेल्फ रेगुलेशन, ये फार्स है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक उतना ही फार्स है जितना सरकार ने बना रखा है प्रेस काउंसिल वाला, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये सरकारी है, वो गैर सरकारी है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। एक और बात बताऊं मैं आपको, बहुत दिलचस्प, मीडिया में कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। समय समय पर आती है समय, और उसके बाद खत्म हो जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में 1986 में पहली दफा, मुझे याद आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों का ऑल इंडिया कंपटीशन के जरिए नियुक्तियां हुई थी। मैं उसी समय पत्रकार बना था। मैं पहली बार नौकरी में मैं गया था 1986 में, और वो नवभारत टाइम्स में, और ऑल इंडिया कंपटीशन था, हर सेंटर पर हुआ था। मैंने, ये गिरिलाल जैन टाइम्स में थे उस समय आई थिंक, और दिलीप पाटगांवकर शायद आ चुके थे सेकंड मैन के रूप में, और राजेंद्र माथुर नवभारत टाइम्स में थे। किसी को पता नहीं किसका हो रहा है अपॉइंटमेंट, और हुआ। आप आज बताइए कितने अखबारों में इस तरह से हो रहा है अपॉइंटमेंट आज की तारीख में। तो सबसे बड़ा बात, प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन प्लेसमेंट भी कैसा होता है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, हमसे ज्यादा। मैं भी एक प्लेटफॉर्म का एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा हूँ, हमने भी प्लेसमेंट देखे हैं, और हम किए भी हैं, फेयर भी किए हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो एक चीज तो ये भी होनी चाहिए। फिर एक एक उसमें भी देखा जाना चाहिए भाई। आप देखिए, जब अश्वेत जो थे अमेरिका में, अश्वेत 12% थे उस वक्त, जब जब वहां पर 111 अखबार अश्वेतों के निकलते थे, 112 अखबार। आज से 200 साल पहले 1811 1811 और 1836 के बीच की बात मैं बता रहा हूं। आज भारत में कितने परसेंट अश्वेत हैं? अश्वेत तो ना कहिए उनको, दलित, आदिवासी। आप उनके पास देखिए कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके जर्नलिस्ट आईएमसी से जो लेकर डिग्री जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो कहाँ पर काम कर रहे हैं? उनके पास यूट्यूब अगर ना आया होता, डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होता, तो वो पत्रकार बन ही नहीं पाते। सच्चाई है। और जो बने हैं वो अपना रीच बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं बहुत सारा, जो जो मीडिया के अपने मानदंड हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आज जो फेस कर रहा है इंडियन मीडिया, हम उसके अंदर की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को भी समझें। पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो जनता देखती है, वो जनता ही तय करती है। हम उसमें अपने को, आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ हीरो और समथिंग लाइक दैट। ये जनता ही हीरो है असल में। हम सब उसके एक तरह से यूं कहा जाए कि हम उनके एक छोटे मोटे वो जो रोशनी फैलाने वाले लोग हैं, जो दिखाते हैं कि वो क्या चाहती है। तो ये जो प्रॉब्लम मीडिया की हैं, इसको देखा जाना चाहिए हर सरकार को। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में सबसे अच्छा समय वो होता है जब अलायंस की गवर्नमेंट होती है,
और अलायंस की गवर्नमेंट मतलब जिसको इंडियन मीडिया ने खिचड़ी सरकारें कहा है, सबसे खराब सरकारें इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र में वो सरकार है जो बहुमत की नहीं होती है, खिचड़ी होती है। मेरा मानना है कि सबसे अच्छी सरकार खिचड़ी सरकार होती है। तो इंडियन मीडिया के अपने नोशंस हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के। और जब प्रसार भारती का जिक्र कर रहे हैं, जब भी इंडियन मीडिया के लिए या आवाम के लिए अच्छे काम हुए हैं, शुरू के दौर की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद का, वो तो दूसरा दौर था। बाद के दिनों में जब भी बेहतर डेमोक्रेसी रही है, सबसे अच्छा मीडिया रहा है, वो तभी रहा है जब अलायंस की गवर्नमेंट्स रही है। भारत एक अलायंस है, हमारा देश भी एक अलायंस है, इसलिए मीडिया भी अलायंस का होना, सॉरी, इसलिए जो 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 सरकारें वो भी अलायंस की हों तो सबसे अच्छा है। प्रचंड बहुमत की सरकारें निरंकुश तानाशाही फासिस्ट होने के लिए अभिशप्त है। भारत जैसे मुल्क में जो सेमी फ्यूडल है, जो बुनियादी तौर पे जहाँ टॉलरेंस नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। आप तो बहुत अच्छी जगह है ना दिल्ली में, गांव में जरा जाकर देखिए क्या हालात हैं, किस तरह दलितों आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ कैसा हो रहा है। हम यहाँ से नहीं देख पाते, आप जाइए तब समझ में आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति के प्रश्न, राजनीतिक जो प्रश्न है वो आवाम देखेगी। मीडिया के अंदर की समस्याओं को हमें ठीक करना चाहिए। क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर अटैक किया जाना चाहिए। आप क्यों रखेंगे 5 मीडिया, क्यों रखेंगे? दूसरी बात कि आप डाइवर्सिटी उसमें होनी चाहिए, वो डाइवर्सिटी नहीं है। इसीलिए अमेरिका के पूंजीपति जो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के साथ हैं। वो ट्रंप जब बदमाशी करते हैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहाँ का ट्रंप जो है उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। आप समझ रहे हैं ना? बस यही मैं कहना चाहता If I may just Yeah, go ahead. add a couple of points. Yeah, When be a the, little brief. I'll be brief. Yeah. When the paid news report came out from the Parliamentary Standing Committee, I had actually deposed before that committee, Yeah. and we submitted my views also. But before that, I should remind you there was a Press Council of India report which was suppressed. In fact, the leaked version, it cited an interview with S. Sivakumar of Times Private Treaties, and that was my interview. We launched our site with that particular interview. Nothing has been done about that, but on the corporatization of media and the fact that it's linked with businesses, I think this is a fundamental issue of the business model of media. After all, media is a business. Media has to make money. They have to pay salaries. They have to pay their proprietors. It's a business. If your viability is going to not be there, if you're not going to be able to make money, then basically either you shut it down or you have affiliated businesses which fund the media business, which is why you have politicians owning media houses or media channels. You have corporates owning them. Many major media publications are there because they are funded by big houses. If you remove that funding, those houses, they will collapse. The point is, what is your solution for that, right? You want to have an advertising policy that places certain restrictions on DAVP. This does not allow the government control. This is, to my mind, a scarcity mindset. It's because you feel that there isn't enough, you want to control what is coming in. What we need to look at is how do we expand sources of revenue for media? How do we increase diversity of media online? How do we have more and more media publications and allow everyone a level playing field? And obviously, from a government perspective, prevent favoritism, prevent, those are mechanisms to prevent. But the more regulations you bring in, the more control you bring in, the more expensive it will be to run a media business, the less viable the media business will be. And it's as someone who runs a media business, I know how difficult it is to maintain a P&L. Then world over, what you will basically have is only philanthropy will run media. Philanthropy comes with its own color of money. Everything is not like the Guardian that has a trust which actually funds the media business. So these are very difficult existential issues. I don't think having more regulation is a solution. It will increase costs, it will reduce viability, it will reduce employment, especially in an environment where media is anyway struggling. I'm not in favor of more regulation, to be honest. I think that's very, very problematic. We need more media, not less. The point which I think Urmilesh was making about cross-media restrictions is basically
talking of a sustainable democracy. Anyway, we can talk about that. Let's have Arfa's view on this, on corporatization, very briefly, and then we'll open it for discussion. Yeah, I think it's a complicated subject. What I can talk about to take this topic forward, like what do we see in future coming up? I can see some global trends already. Spending a couple of weeks at Stanford, is the model or revenue and journalistic model for democracy and for journalism should be small media houses, for profit or not for profit. But usually what I can see is the trend all over, even in the United States, many parts of Europe, even many countries in Asia, where they're successfully running, is small media houses run by passionate individuals who want to tell the important stories, raise people's voices, and self-sustain model. Like I would talk, I'm very proud to say the Wire has been able to successfully run for the past several years, since 2015 until now. It's almost a decade. I think we are, in a way, more or less self-sustained. So I feel when we talk about corporatization of media, or we talk about government control over media, this model looks like, if there are more people who can experiment with this, again, I mean, we are not going to get hefty salaries. This is not going to be nothing comparable, the market comparable. What will drive you eventually is your passion for your work. And you need a few right-thinking, passionate individuals who can run a newsroom and also train future generation of journalists. I think one thing we forget about is the training of journalists. There are many people who now in right-wing circles, especially on YouTube, people who are emerging have nothing to do with journalism, absolutely. So they don't know what journalistic rules are. They don't know, they've never read a journalism book in their lives. The alternate to this would be a more informed, if we want to build a more informed citizenry, there has to be, I think, more and more small newsrooms run by passionate individuals, passionate journalists who can tell the stories and also train future journalists. Thank you, Arfa, for that. Now we'll go for the first round of questions. Yeah, Satyanarayana. Yeah, I think it's important to reflect on the hate content in our media these days. See, I remember 1926, Mahatma Gandhi wrote that newspaper man has become a walking plague because of the hate-filled content being transmitted through newspapers in 1926. And today we are in 2024. So the hate content transmitted through TV channels, through newspapers, and the kind of polarization taking place in society, and minorities, are being targeted in the name of food, their dress, and so on and so forth. So how do you think, I mean, this is a question to everybody, all the panelists, to deal with this situation? Take two more and then put it to the panel. Anybody here? Yeah, please. Professor Patbial was, in fact, speaking in January on the seminar we organized in this very room on keys to governance, free, pluralistic, and independent media. So go ahead. Thank you, Suhas. In fact, seeing Arfa here, Arfa, we started our journalistic career almost simultaneously. I saw you from the newsroom in Rajya Sabha. Urmilesh was also there, and I'm quite proud of you. We're very proud of you, the way you have sustained your passion. Not just passion. I follow your Facebook and others, and kind of abuses that she gets. A timid mind like me, I just abhor that kind of thing, and you can't do anything. But despite all of these, that people like Arfa and very few people are left. So one is therefore agreed with Urmilesh that there are people, and we are so proud of them sustaining our democracy. The question that Satyanarayana raised, and it's actually an important question,
the hate that Arfa faced last 7-8 years was also beginning even before the regime began. And I saw that actually in physical presence. So it was there. The hate is there in the society as such. 26 and 2016 are not much different. What is it that changed, Arfa? You are the best person to say. What was the hate that we saw in the studios in 2013, 14, and that you faced in 2019? What was that? We know that, attack on minority, communalism of a deep kind of hatred, but suddenly what happened? From outside, we didn't actually yet to understand it properly. Yeah, thank you for that question. I think so. This may be the first public announcement that I'm making. I'm also working on a book, and things that you're talking about, I have written them down, and in a very descriptive manner, how I saw Indian newsrooms change. So this is going to be a book by a reporter, but also somebody who is a witness to India's transition from a secular democracy to a theocratic Hindu nation. And the story of India's transition was taking place in schoolrooms, in college rooms, in our offices, in, of course, on the streets, in the parliament, everywhere. So the newsrooms were also not untouched. I kind of agree with you that this did not just, I mean, this may have been given encouragement by the people in power in, starting 2014 until now, but started actually in the late 2010s. In early 2010s, which is 2011 to now. So this is like 1.5 decades of this whole. So I feel I connect it to the whole social radicalization of the majority community, which was a prerequisite for this political party to come to power. Because if people do not think a certain way, they cannot vote a party which is essentially an ideological party. So I think the work in progress, it started, of course, 100 years ago when RSS was established, but it culminated into something meaningful, something which gave them strength from 2010 onwards. And I saw myself newsrooms changing, where the environment changed. I have also written down in my book how I have experienced the so-called most secular newsrooms, their communalism, somebody like me experienced. So initially it used to be, the communalism used to be subtle. And then when started getting patronage from the people in power, the most powerful men and women in the country, then it became fashionable. So I think what changed with the arrival of Mr. Modi was that he did not kind of, communalism did not originate with him. It just became fashionable to be more communal. And it became more fashionable to attack and to, pass snide remarks about your own colleagues, about neighbors turned against their own neighbors, shopkeepers, they turned against their own, fellow shopkeepers, student turned against students. So similarly, journalists also turned against journalists. And these are not happy stories that I want to tell, but there were young girls when I used to be on TV, on NDTV. There used to be these young girls who were journalism students, and they will write to me fan emails saying that how much they appreciated the way I spoke, the way I did my journalism. Even, sometimes I would wear a new dress, a new jacket, and they will write an email to me saying that how much they like it. And the same women journalists now who are on television, they are anchors or reporters, they quote my tweet and say, ye dekhiye jihadi journalist, ye dekhiye Pakistani journalist. So it's the same people who used to be my fangirls, who used to admire me, who wanted to be like me. For them, I was no more, a figure who they admired. I was no more a role model, but they also reduced me. So the radicalization came to a point where even for these young women, who I don't know whether they're being communal or being victim of communalism, where they do not see the world they used to or they should see anymore. That's a very valid point you've made, how the communalization took place. I mean, from being subtle to being fashionable, because this is state patronage to communalism. That's what it is. Yeah, go ahead. Yeah, please.
I just, on the point of corporatization, the point you raised. So we have the point what Arfa said, small is beautiful, and what Nikhil says, big is bountiful. So I think I come from the field of banking and finance. So there is a regulation that corporates cannot own a bank. Corporates cannot own a bank. So if you draw that parallel, can you create a threshold? Beyond this threshold, corporates cannot own media houses based on certain revenue threshold. That is point number one. Point number two, the point which Mr. Nikhil was mentioning, the dynamics of journalism has changed. It is no longer a big press and a lot of capital investment. You need a big idea how to capture through digital means. So we create a digital startup ecosystem. And how do we promote that? I think that 1,000 flowers will bloom if we promote that. I think that is the direction we are moving. And we'll create a lot of trusted individuals, which you mentioned, through that 1,000 flowers model. I think these are the two ideas we can work on. I am not a journalist. The friends on the other side, I think you can work on that and look at some solutions. Yeah, thank you. Thank you. That is Harun Rashid Khan, the former Deputy Governor of the Reserve Bank. Thank you very much for that intervention. No, I think the future is let 100 flowers bloom. That because that itself makes it democratized. And the point I'm, you talked of the jute press. I mean, you see, a person like Adani comes in and he buys up things like hot potatoes, and that's the end of everything, So, I mean, take for the instance of NDTV, journalists had to just overnight leave. So some are sticking around, but it's been a hard task for them, to get around the diktats which come every night on what is to be put up and what is not to be put up. So anyway, so we'll pick up any more. Hello. Yeah, go ahead. Sir, my question is, this is Jyoti. मेरा सवाल मिस्टर उर्मिलेश जी से है। वो बताएं कि आप कहते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता और ऑब्जेक्टिव पत्रकारिता की बात करते हैं। पत्रकारिता का मतलब जो हम लोग लेमैन हैं वो समझते हैं कि वो दर्पण है, जो दिखता है वो दिखाना है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं तो और निष्पक्षता की बात करते हैं, कोई भी घटना होती है उसका दो पक्ष होता है। तो जब आप निष्पक्ष रहने की बात नहीं करते हैं तो कोई घटना के पीछे भी एक कहानी हो सकती है जो गलत होगी, क्योंकि एक घटना बड़ी हो जाती है मौत के तौर पर, बलात्कार के तौर पर, किसी पिछड़े समाज को बहुत क्रूरता से उसको दबाने के तौर पर, तो उसके पीछे की घटनाएं बहुत जी जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो तरह की जो बातें हैं, उसको आप कैसे ऑब्जेक्टिव होके आप उसको खबर छापेंगे अगर आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो? क्योंकि आपको तो क्रुएल्टी भी दिखाना है और उस क्रुएल्टी के पीछे जो एक साइकोलॉजिकल और जो हैरासमेंट है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो भी दिखाना है। सर, संक्षेप में मैं बस ये कहूंगा कि आप निष्पक्षता, चूंकि बहुत ज्यादा ये चर्चित शब्द हो गया है हमारे हिंदी भाषा में, बहुत ज्यादा, जहां भी पूछे वो निष्पक्ष पत्रकार है, वो क्या कहते हैं, वो पता नहीं गोदी पत्रकार है। तो वो मैं जानबूझकर एक फिलोसफिकल एक इशू उठा रहा था कि दरअसल पत्रकार को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम तो किसी पक्ष के नहीं हैं, अरे ऐसा हो कैसे सकता है कि आप किसी पक्ष के ना हो? ये कैसे हो सकता है? अगर अन्याय का पीड़ित कोई व्यक्ति है, आप उसके साथ हैं, उसके पक्ष में हैं, उसके पक्ष में खड़े होने से क्या मतलब, क्या दिक्कत क्या है? तो इस पक्षधर शब्द को मैं पवित्रता देना चाहता हूं, उसको निष्पक्षता के नाम पर मैं अपवित्र नहीं करना चाहता। इसलिए मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जर्नलिस्ट को। ये कोई नेता नहीं है कि इस पक्ष या उस पक्ष का। पत्रकार एक अलग इकाई है, इसलिए इस सेंस में मैंने कहा, क्योंकि किसी घटना, किसी
पहलू को देखने का आप अपनी आंख से देख रहे हैं, कोई दूसरी आंख से देख रहा है, लेकिन नजरिया तो सबका अलग अलग है। नजरिया किसका? अमर्त्य सेन ने भी भारत की रियलिटी को देखा, भारत की गरीबी को देखा, और भारत की गरीबी को देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर भी, दोनों गरीबी पर लिख रहे हैं। अमर्त्य सेन क्या लिख रहे हैं? अमर्त्य सेन उसमें किन सवालों को उठा रहे हैं? सवाल ये, और यही ऑब्जेक्टिविटी है। So, okay, so he asked a question, so I'll answer it. Yeah. No, go ahead. Go ahead. Take your question. Good evening, everyone. Thanks to all the panelists and the discussants. The discussion has triggered so many thoughts in my mind. My question right now is, I'm a student of Center for Media Studies, Jawaharlal Nehru University. And in 2019, my university was, students' body particularly was involved in a huge protest against the fee hike. And in that phase, we as the students' body and individual students as well, we decided to reject all the journalists. We rejected interviewing and or giving any kind of content to the journalists who were propagating hateful content against the students and treating us as the tukde gang, so to say. So now that I'm hearing stories about how people from a particular party were not very comfortable with talking to Miss Arfa, I am wondering that we were also utilizing the same kind of method. So in that case, how do you think of, the method is exactly the same, although the intention is completely different. So do you think that it is just the flipping of the coin, and it's just the same story in the two intentions, or is there any benefit in utilizing the same method as the other side is using? I hope my question is. Yeah, fine. We'll ask Arfa. Do you react to that? Where is she? She's disconnected? May Yeah, I answer yeah, the yeah, question? you go ahead. Thank you. So, I think we hope 1,000 flowers will bloom, but the reality of the situation is that you're moving from an ecosystem of distribution oligopolies to infinite competition. So the internet, for example, especially with tools, one, there's no cost of distribution, but also there's no cost of publishing because you've got CMSs that allow you to anyone to set up a site and publish, right? But what that enables is everyone is publishing. And so you move to an environment of infinite competition, and that means there's also infinite competition of revenue. So what we've seen is that advertising yields are extremely low on the internet. The traditional media houses that you're seeing, they're struggling with the switch to digital because their digital revenues will be minuscule compared to what they get offline because of the distribution oligopoly. That switch is going to be very painful. You'll see more and more media houses actually either stumble or die or get acquired by someone else. And I've run now a P&L or actually rather run a cash flow statement for 16 years running a small online media business. It's not easy doing this, and there isn't enough money also because you have the likes of Google and Facebook, which have aggregated audiences and scale. And they're also monetizing that, that you're actually competing with them for advertising. So for most players, advertising as a source of revenue is actually dead. This competition is going to increase with AI. And therefore, you will find that yields will drop even further. Subscription is one mechanism, and I think I've also spoke about that. The problem with the subscription business model is that how many subscriptions will you buy online? So on an average, it's about 2 or 3 subscriptions that people end up buying,
which is not sufficient enough to support the entire ecosystem. So what I'm trying to say is that we have significant headwinds ahead of us. We've gone through a period of significant headwinds for the same reason. We'd like to believe that the online media ecosystem will flourish, but it'll flourish because of passion, not because of viability. Thank you. Any other, I think it's been a long, we'll close now. Do you want to reply to her? I think you got the answer. No, no, she asked. See, मेरा मानना यह है कि जो हेट का मामला है, इट्स नॉट न्यू, इट्स इनहेरेंट इन आवर सोसाइटी, हेट, और बहुत पहले से है हमारी सोसाइटी। वो आज़ादी के बाद भी खत्म नहीं हो कर पाए, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सोशियो इकोनॉमिक जो ज़रूरी एजेंडा था उसको आगे हम नहीं बढ़ा पाए। विवेकानंद जब केरल गए थे बहुत पहले, तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही अराजक किस्म के पागलों का वो एक अड्डा है। क्या वो अंग्रेजी में उनका था ल्यूनेटिक एसाइलम। हाँ, तो ये कहा था विवेकानंद ने। मुझे आज भी उनकी बात याद आती है। केरला बहुत ही बुरी हालत में था, इतनी बुरी हालत में था कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बिहार, उड़ीसा या यूपी जिस हालत में आज है, उससे भी बहुत बुरा हालत में था। तो लेकिन केरला का चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, वो जब मैं देखता हूँ केरला की हिस्ट्री, बाई चांस मैं केरला की हिस्ट्री हाल के कुछ वर्षों में मैंने पढ़ा है, कवर किया है। 3 चुनाव मैंने केरला के कवर किया है। आई थिंक हिंदी का मैं इकलौता पत्रकार हूँ शायद, हालांकि मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं 3 बार वहाँ केरल गया और कवर करते हुए मैंने पाया कि वो काम आज़ादी के बाद वहाँ हुआ। कैसे हुआ कि विवेकानंद को अगर फिर जाएंगे, अगर विवेकानंद आकर पैदा होकर, तो कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि आप जानती हैं एसडीआई में नंबर 1 है केरला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 है इंडिया में, और वो लगातार है, कभी चेंज नहीं होता। दूसरी बात कि यूरोप के कई मुल्कों के बराबरी में उसका एसडीआई है, यूरोप के मुल्कों के। तो ये हालत उसकी है। ठीक है, उसकी अपनी बुराइयां हैं। उसके 2-3 कारण रहे जिसकी वजह से हुआ। पहला, एजुकेशन पर काम हो जमकर किया। गवर्नमेंट स्कूल्स हर ब्लॉक, हर जिला, हर गांव में, बड़े गांव में हेल्थ सेंटर, रेफरल अस्पताल। आप बताइए, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बहुत सारी जगहों पर हम लोग घूमते हैं, मध्य प्रदेश, कितने स्कूल बंद किए गए हैं हाल के दिनों में। इस पर स्टोरी आप देखते हैं हिंदू में, डेक्कन हेराल्ड में, या मैगजीन्स में, ईपीडब्ल्यू में आप स्टोरी देख सकते हैं। हमारे जैसे यूट्यूबर की कोई कहानी देख सकते हैं, जिसको बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों को 55,000 एक स्टेट में बंद कर दिए गए, किसी के यहाँ 30,000 बंद किए गए। स्टोरी नहीं है मीडिया में स्टोरी नहीं है। मस्जिद की कहानी रोज चल रही है सुबह से शाम तक। ये क्यों चल रहा है? हेट स्पीच कहां से आ रहा है? क्योंकि हेट आपके यहाँ है, वो हेट को खत्म नहीं होने देना चाहते। लैंड रिफॉर्म्स किया, उसकी वजह से बराबरी आई लोगों में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने पहला भारत में किसी स्टेट में जातिवार सर्वेक्षण कराया। ये कहते हैं ना लोग। स्वयं नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं भारत का पहला राज्य हूं, बिहार, जिसने जातिवार सर्वेक्षण कराया। इससे हमको बहुत फायदा मिलेगा। फायदा वो नहीं ले पा रहे हैं, कोई फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं। केरला भारत का पहला राज्य है, मेनी पीपल डोंट नो, जिसने 1968-69 में कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। कास्ट वाइज, दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 1931 इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि पूरे देश में तो हुआ नहीं। उसका क्या फायदा मिला? उसका फायदा मिला कि उन्होंने सोशल श्रेणियों के आधार पर चीजों को एड्रेस करना शुरू किया और समाज समावेशी हुआ। जो सोसाइटी जो थी वो समावेशी बनती गई, और इसके बाद धीरे धीरे हेट के जो सोर्स ऑफ हेट जो था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बहुत पहले मैंने गोपाल गोडसे का इंटरव्यू किया था, उनकी मौत से काफी साल पहले, उनके घर में जाकर। गोपाल गोडसे वही जो नाथूराम गोडसे के भाई, और आजीवन कारावास की सजा भुगते। उन्होंने मुझसे कहा था, वो इंटरव्यू छपा हुआ है दैनिक हिंदुस्तान में, और उनकी जो बेटी थी उसका भी मैंने इंटरव्यू किया, श्रीवानी या श्रीवानी सावरकर या समथिंग लाइक दैट, सावरकर की पुत्रवधू थी, दोनों का किया था। उन्होंने कहा कि अगले 50 सालों में भारत में नाथूराम गोडसे को पूजा जाएगा। तो हमने कहा क्यों आप कह रही हैं ऐसे? वो तो हत्यारा था गांधी का, और उनके घर में मैं बोल रहा था।
उन्होंने कहा आज आप हत्यारा कह रहे हैं, 10 साल 50 साल छोड़ो, 10 साल बाद आप हत्यारा कहोगे, तुम्हारी गर्दन काट ली जाएगी। मैंने कहा अभी तो नहीं काट पा रहे हैं ना, ये मैंने पूछा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि दो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हेट की जो उनकी कल्चर है, हेट की जो उनकी पॉलिटिक्स है, हम आगे बढ़ाएंगे। क्यों? गांधी नहीं थे, नेहरू नहीं थे, अंबेडकर नहीं थे, इंदिरा गांधी भी नहीं थी। बाद के दिनों में सारे नेता खत्म होते गए जो आजादी की लड़ाई से निकले थे, जिनके पास वैल्यूज थे। धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन भी खत्म होता गया, लेफ्ट मूवमेंट भी खत्म होता गया। तो जितने टॉवरिंग पर्सनैलिटीज थे जो हेट की पॉलिटिक्स को, फ्यूडलिज्म को, कास्टिज्म को एड्रेस कर रहे थे कि इनको कैसे खत्म करके भारत को एक आधुनिक राज्य बनाया जाए, आधुनिक राष्ट्र बनाया जाए, वो धीरे धीरे खत्म होते गए। कौन लोग आते गए? लघु मानव। राजनीति में भी, मीडिया में भी, राइटिंग्स में भी, हर जगह लघु मानव मतलब उसको हिंदी अंग्रेजी में क्या कहेंगे, माने स्मॉल पिद्दी लोग आते गए। और उन्होंने धन कमाने से लेकर के और हर तरह की वितंडा रचे, माने मूर्ख अज्ञान का आनंद लोग उन्होंने राजनीति में बुना, मीडिया में भी वही किया। तो उसकी वजह से हेट का जो सोर्स है वो आप खत्म नहीं कर पाए, और आज वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आप देखो बीजेपी आरएसएस ने जो पिछले 30 सालों में काम किया है, उस तरह का काम करने वाला भारत में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दो। उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। सारे सेठ साहूकार जो पहले दूसरी पार्टियों को भी पैसा देते थे, वो सारा पैसा जाने लगा आरएसएस बीजेपी की तरफ। मैं खुल के ये बात कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और दूसरे लोग केवल ये सोचने लगे कि अरे हमारा सितारा, हमारा हीरो, हमारा स्टार। नो, असल में काम नहीं किया गया हेट के खिलाफ, और हेट के जो सोर्स है उसको नहीं खत्म किया गया। ये कहानी है। I think we've had a good discussion, and it is about time to close. And thank you all very much, and we'll carry this forward. Thank you all. थैंक यू। उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा, मैं बहुत मैं जब भी जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि